We shall start now. Good afternoon to all. So, good afternoon. Good afternoon, sir. So, we have conducted two sessions so far of analog and digital electronics. And out of both sessions, first session was just introduction to the course, and in last session we have seen the basics required for the course. We have started from semiconductor and we have ended up to the PN junction working, how PN junction forms, right? So now we will start today's lecture by continuing the same topic of our last session. So PN junction diode. All of you might have studied about this in your basic electronics course, that PN junction diode. So the term diode comes from, or di implies two, and ode is taken from the electrode. So since you can see here that this is the symbol of your diode, it has two electrodes, or you can say that it has two terminals. One is F stands for anode and C stands for cathode. So always remember, this is the symbol. This arrow indicates the flow of current. Okay. So this triangle part, basically this triangle part is nothing but a P type. Okay. Here we are seeing it is P type, and this bar like structure, straight line, is nothing but a N type. So this part is P and this is N. So this is the symbol of your PN junction diode. So the working principle of PN junction diode is very simple. And again, this particular diode. It is a practical diode. When you are performing practical, you are using this particular diode. So how to identify which terminal is anode and which terminal is cathode? Anyone having idea? In practical, you are having this particular diode. Okay, this is your practical diode. Then how will you identify which is cathode and which is anode? The simple trick is here that you can observe here. I hope it is visible that at this particular end there is a silver strip. Silver color strip is there, so that stands for your N. Okay, so this part, this electrode will be your cathode, and another will be your anode. Okay, so this is how you can identify the pins of your diode. Now again, this is a simple explanation of diode. That diode is a two-terminal electronic component that conducts current primarily in only one direction. Okay, so it has a low resistance in one direction when it is connected. So there are two terminals, right? So it can be connected in two ways. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? इट कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज. कैसे कनेक्ट करोगे? एक तो आप एनोड को प्लस दोगे. either you will connect Either you will supply a positive terminal of your supply, external supply, to this particular anode and negative to this. और नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? नेक्स्ट कंडीशन या होगी, या एक तो आप कैथोड को पॉजिटिव दोगे या फिर एनोड को नेगेटिव दोगे, राइट? सो दिस इज वेरी, द डायोड कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज to the external supply. So depending on that two ways, it will conduct only when it is forward bias. So just for now, remember the term forward bias and reverse bias. Okay. So now it's about the second point. So in first point, we have seen the diode is nothing but the two-terminal electronic component which will allow the direction current to flow in only one direction. Okay. Whenever current is flowing through the particular diode, it acts as a short circuit. Short circuit means zero resistance. And when the current is flowing in opposite direction, then it is offering infinite. Ideally it should offer infinite resistance, but in practical case it offers the high resistance. Okay, so we will see in which condition it is offering low resistance and which condition it is offering high resistance. Okay,
So now it conducts only when it is connected in forward bias. That is, the positive terminal of supply is connected to the P type and negative terminal is supplied to the N type. So suppose in this particular diagram I am explaining, so this is my P type and this is N type. So suppose I have connected positive terminal of battery to P type and negative terminal of battery to N type, then that connection will be called as forward bias. Okay, and your diode will conduct the current through it only in forward bias. So always remember, diode can be connected in two ways, in forward bias or reverse bias, but it conducts only when it is forward bias. Forward bias means P type को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और N type को नेगेटिव टर्मिनल. Okay, and when you are reversing your connection, it will be in reverse bias. So in reverse bias connection, it offers very high resistance. In forward bias, the resistance is very small, so that's why current can flow. But in reverse bias, the resistance offered by diode is very high, so that's why current conduction cannot take place here. So this is the basics of your PN junction diode. Okay, so in your syllabus, our first topic is nothing but the transistor as an amplifier again, but this much knowledge is required in order to approach towards the our first topic. Okay, then now this slide is very important. So it tells you about the variation in the depletion width. Okay, it tells you about the variation in depletion width in three cases. First case is it is unbiased. So remember, the term biasing is nothing but supplying external voltage or external battery to it. Okay, when you are connecting external voltage supply to it, then it is called as biasing. So three different conditions here we will see that what happens to the depletion width when it is in three conditions. So first condition is it is unbiased, means no external connection is there. Simply जैसे का वैसे ही आपका डायोड है, कुछ कनेक्शन नहीं किया. Next condition is when it is in forward bias, and third one is when it is reverse bias. So we will see step by step what is happening here. So in last lecture, we will study this particular diagram. जहाँ पे यहाँ पे जो unbiased लिखा है ना, that is our first discussion. We will discuss this particular diagram first. So in last session, at the concluding remark only, we have seen this particular thing. Okay, so I am just telling you what is in this particular diagram. So this much part is your N type. Okay, this rectangle is your N type semiconductor, this rectangle is P type semiconductor. They are forming PN junction. We know at PN junction there will be formation of depletion region. What is depletion region? Depletion region is a PN junction region in which there are no majority charge carriers and no minority charge carriers. Means in this particular region, that is region around PN junction, this region will be depleted from holes as well as electrons. So that's why this region is called as depletion region. So we have already discussed this particular diagram in last session. Okay, and these are again positive ions and negative ions. So you have to remember that ions does not contribute to the flow of current, है ना. Ions आपके charge carriers नहीं है. Your charge carriers are majority charge carriers in N type will be electrons and minority है. Electrons are shown by the brown color. Okay, so in this particular N type, these are nothing but the brown color circles and nothing but electrons. White color circle is nothing but hole. Similarly, in P type, majority charge carriers will be holes.
एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, होल्स कम है। सिमिलरली पी टाइप में होल्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम। तो ये कंडीशन तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर लास्ट सेशन। ओके, सो नो एक्सटर्नल कनेक्शन इज गिवन. Now we are, so this is nothing but a particularly PN junction diode only. So now what we are doing, we are connecting our diode in forward bias. So what do you mean by forward bias? How will you connect? When P type semiconductor, है ना? Here you can see when P type is connected to the positive terminal of your battery. This plus is nothing but a positive terminal of your battery. And this N type is nothing but is connected to the negative terminal of battery. है ना? ये प्लस और निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल्स आर ऑफ द फ्रॉम एक्सटर्नल पावर सप्लाई. जब आप आपके सर्किट में ऐसे कनेक्शन करते हो देन इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस्ड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट फॉरवर्ड बायस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट डिप्लीशन विड्थ विल गेट रिड्यूस्ड, है ना? हियर इट इज सेड दैट डिप्लीशन विड्थ व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेस. मतलब जैसे जैसे ये एक्सटर्नल वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ कम कम होते जाएगी. Why this is happening is very simple logic. Suppose negative यहाँ पे, negative of battery on this particular side, right? So what this negative voltage will, suppose I am increasing this negative voltage, suppose I am increasing the voltage और supply battery का जो voltage है वो मैं vary कर रहा. तो actually क्या होगा, we are discussing now this particular case, forward bias. सो निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव वोल्टेज आएगा और पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्जेस विल बी देयर. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस निगेटिव चार्जेस, है ना, एक्सटर्नली जो आपने प्रोवाइड किए, सो दिस निगेटिव चार्जेस विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड अभी एन टाइप इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे. तो एक तो ये यहाँ का निगेटिव चार्जेस इज repelling these electrons. At the same time, these positive charges will attract these electrons. Okay, so electrons यहाँ से repel हो रहे हैं from negative terminal and they are moving towards the p-type semiconductor. So that's why what is happening, so initially जो आपकी depletion width थी, now electron will move towards the junction. So that's why धीरे धीरे क्या होगा, आपकी depletion width कम होगी. Similarly, if we are discussing on the p type, then what is happening here, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए एक्सटर्नल बैटरी के. सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल दिस पॉजिटिव होल्स. सो अगेन रिपेल कहाँ पे करेंगे, टूवर्ड्स द पीएन जंक्शन. एक तो ये प्रोसेस हो रही है. ऑन द अदर साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव है, तो ये निगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्ज होल्स को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एन एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, whereas holes are moving from p type to n type. Okay, so always remember, now here comes a concept called as a conventional current. कैसे move होगा, n तो है ना, electron is moving from n to p and holes are moving from p to n. Now the question is external current कैसे, मतलब सर्किट में से करंट की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, that is the question. So you have to remember one thing for that, just let me write it for you. Okay, so suppose now what is the direction of current here, so holes are moving from p to n. So this is the direction of your holes.
holes movement. Okay, holes are moving from p type to n type, है ना, and electrons are moving from n type to p type. Now what will be the direction of your conventional current, what will be the direction of your external current? So always remember, external current will always flow in the direction opposite to the flow of electron. तो ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, मतलब आपके सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. So this is very important point. I hope you understand that first one direction किसकी है, from this is the direction of flow of holes from p type to n type. Second direction is from the flow of electron from n type to p type. और ये आपका कन्वेंशनल करंट. तो सपोज आपका इलेक्ट्रॉन है ना, सपोज किसी ने आज आपको पूछा कि मेरा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू एन मूव हो रहा है, लेट्स से फ्रॉम पी टू एन, तो आपकी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखो. और दूसरा पॉइंट कौन सा, कन्वेंशनल करंट और होल्स की डायरेक्शन, होल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन, दिस विल बी इन द सेम डायरेक्शन. So I hope these 2 points are very important and it is clear to you. These are again very basic concepts we are talking about. आपको पता हो सकता है शायद मैक्सिमम लोगों को. Okay. Then this is about forward bias. So one important thing you have to understand is when you are connecting your diode in forward bias, what is happening to the depletion width? It is decreasing. But we have to note this particular point. When diode is connected in forward bias, depletion width decreases. So depletion width decrease होती है, so that's why current conduction यहाँ पे possible होता है forward bias. Okay, this is the point you should take a note of. Now similarly, in this particular diagram, in reverse bias diagram, here you can observe that n type is connected to the positive terminal of your battery or external supply, है ना. वहाँ पे कैसा था, n को निगेटिव था. Now in this case, positive terminal is connected to the n and negative terminal is connected to p. Okay. तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव, एंड इन दिस यहाँ तक आपका पॉजिटिव आ रहा है. So now same logic you have to apply. Since this is positive charges are there, है ना, external positive यहाँ पे आया है, so what this positive charge will do, it will attract these negatively charged electrons. तो ये सारे electrons positive charge की तरफ जाएंगे. The movement will be like this. तो यहाँ पे भी जो थे electrons है ना, in this case they will also start moving towards the this particular thing. Okay, so here you can see that in just above n type, the direction of flow of electrons is shown here, right? So here this is nothing but the free electrons, the movement of free electrons. So we know now that this is the direction of free electrons. Now similarly, what is happening here at the p side, that these are negative charges, right? So what is happening, negative charge will attract positively charged holes. So again यहाँ के जो भी होल्स है ना, जो पी एन जंक्शन या फिर डिप्लीशन रीजन के जस्ट साइड के है, तो वो सारे के सारे होल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द at the end of this particular p type. What is happening actually, if you are able to see, then this depletion width is increasing. Why it is increasing? Because these negative charges are attracting positive holes. Similarly,
these positive charges attracts negative electrons, है ना। तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, होल्स भी दूर जा रहे हैं, मतलब फ्रॉम द पीएन जंक्शन. सो दैट्स व्हाई the width of this particular depletion region will increase. I hope it is clear to you. So the takeaway points are, just I will mention that takeaway points is from this particular discussion. You have to remember only these 2 points. First point is, in forward bias the depletion width decreases and current flows through it. Current flows through diode. Number 1. Second point, in reverse bias the depletion width increases. So that's why the resistance offered by the PN junction diode also increases, है ना. डिप्लीशन रीजन क्या कर रहा है, उसकी विड्थ इंक्रीज हो गई, मतलब it is offering more resistance. So that's why it is not possible for charge carriers to cross this particular depletion width, right? So no current will flow in this connection. Current will always flow in forward bias when you are connecting your diode in forward bias. I hope this slide is clear to you. If you are having any doubt in this particular slide, then you can ask me. Is it okay until this point? Yes, sir. Okay. Sir. So now these are the takeaway points. Again, I have displayed in this particular slide. Whatever we have discussed so far, these are the takeaways. Important points about a PN junction diode. So I will just read it for you. The junction region itself has no charge carriers and is known as depletion region. The depletion region has a physical thickness that varies with applied voltage, right? So just now we have seen the depletion width is varying depending on the external voltage. Now 3 points are, first is related to the unbiased diode. When the diode is zero biased, that means no external energy source is applied and a natural potential barrier is developed across the depletion layer. We have seen when it is unbiased, diode is unbiased, एक नेचुरली डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है और वो कांस्टेंट रहता है ना. इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पे देखो, तो जब अनबायस्ड रहता है तो दिस नेचुरली ये प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे डिप्लीशन रीजन एंड इट विल बी कांस्टेंट. ओके, सो दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स यू आर यूजिंग. तो अगर आप सिलिकॉन का मटेरियल यूज करते हो, है ना, इफ यू आर preparing your diode, if the diode is made up of silicon, then the particular depletion width, है ना, it is also called as potential barrier, है ना. so potential barrier की या फिर built in potential भी बोलती है इसी को. these are the same, these different terms are used for the same concept. depletion region, potential barrier, built in potential. तो सिलिकॉन के लिए बिल्ट इन पोटेंशियल क्या रहता है, 0.5 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट तक. तो आप 0.7 ध्यान में रखो. प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली 0.7 होता है, बट प्रैक्टिकली इट कम्स अराउंड 0.5. इसका मतलब क्या है कि आपको करंट फ्लो होने के लिए, कंडक्ट होने के लिए इन योर सर्किट व्हेन यू आर कनेक्टिंग योर डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो इन ऑर्डर टू गेट फ्लो ऑफ करंट मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इज 0.7 वोल्ट, है ना. जब आपका वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाएगा देन करंट विल फ्लो. अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया लेकिन एक्सटर्नल वोल्टेज सिर्फ 0.6 वोल्ट ही दिया,
है ना, तो there will be no current again. Minimum voltage should be given as 0.7 if your diode is of silicon. If it is of germanium, then the built-in potential is 0.3 volt. Okay. The second point is when junction diode is forward biased, the thickness of the depletion region reduces. Now this highlighted portion is very important, and we will use this particular term in our transistor working of transistor slide. तो हो क्या रहा है, इन फॉरवर्ड बायस द डिप्लीशन रीजन रिड्यूसेस, डिप्लीशन विड्थ कम हो रही है, मतलब क्या, जंक्शन बिकम्स लो रेजिस्टेंस पाथ, है ना. सपोज डिप्लीशन विड्थ कम हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, राइट. So now this is very important that in forward bias the junction becomes low resistance path. It offers low resistance path and diode acts as a short circuit, allowing full current to flow. Okay. Then third point, when the junction diode is reverse bias, the thickness of depletion region increases. That means the junction becomes high resistance path. Width बढ़ गई मतलब resistance भी बढ़ जाएगा. And the diode will act as a open circuit, है ना. डायोड एक्ट क्या करेगा रिवर्स बायस में, इट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट. सो दिस इज नथिंग बट ओपन सर्किट. शॉर्ट सर्किट मतलब सिंपल वायर का कनेक्शन, अनबायस्ड में जो आप कर रहे थे ना, और अनबायस्ड में इट विल एक्ट एज अ, दिस इज पी, दिस इज एन. इसकी वैल्यू क्या होगी इस वोल्टेज सोर्स की, 0.7 in terms of silicon and 0.3 in terms of germanium. Okay, so these are the three cases mentioned here. All right. So just remember these two terms which I have highlighted, that in forward bias the depletion region reduces, that's why the junction becomes low resistance path, it offers low resistance, and here it offers high resistance. Okay, we'll move ahead. Now we are coming to the bipolar junction transistor. What is actually BJT is? Okay, so BJT stands for bipolar junction transistor. Why it is called as bipolar? This question is very important, and most of the students पूरा का पूरा कोर्स पढ़ लेते, but they are not able to explain what is the meaning of bipolar. Okay, so just you can just note it down. Bipolar word कहाँ से आया? So bipolar stands for, since in transistor the current conduction is due to both charge carriers, minority charge carriers as well as majority charge carriers. Okay, or in on other hand you can say like this, that the current conduction in transistor, the current conduction in BJT is happening due to electrons as well as due to holes. Electrons are having negative polarity and holes are having positive polarity. So you can say that the current conduction is happening due to both polarity charge carriers. So that's why the term came from bipolar. मतलब आपकी बीजेटी में जो करंट कंडक्शन होता है, दैट इज ड्यू टू द चार्ज कैरियर्स ऑफ बोथ पोलैरिटी, निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. सो दैट्स व्हाई द टर्म केम हियर एज bipolar. Why junction? Because there are PN junctions are there. And transistor, why it is called as transistor, we will see. Once we know it's working, then we will justify that is the functioning of transistor and why we are calling it as a transistor. Okay, so now these are few facts about these are few points about the BJT.
First is BJT. What is BJT? BJT is a 3-terminal device. Diode was 2-terminal device, BJT को 3 terminals रहेंगे. So BJT is 3-terminal semiconductor device which is used to amplify or switch electronic circuits. So main two applications of transistor और BJT. तो जब भी मैं ट्रांजिस्टर बोलूँगा बाय डिफॉल्ट ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट ए बीजेटी ओनली, है ना. अगर मुझे कुछ दूसरा ट्रांजिस्टर के बारे में बोलना है तो आई विल कॉल इट देन. जेफेट का एक टॉपिक है आपके लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, तो तब मैं जेफेट बोलूँगा, तब ट्रांजिस्टर मतलब जेफेट. फिलहाल के लिए whenever I am saying transistor, it by default means it is BJT. Okay. So whenever what are the two main application of BJT? First one is to amplify the signal, and second one is to it can be operate as a switch. Okay. Now about the BJT or about transistor, it is referred as one of the most important inventions in 20th century. This is very important invention. It is invented by 3 scientists named as John Bardeen, Walter Brattain, and William Shockley. They were working at Bell Labs. All were American physicists, and due to their contribution, due to their this invention, they have given the 1956 years Nobel Prize in Physics. So this is very important invention. You should understand this point. Okay, due to transistor have already revolutionized the field of electronics and paved the way for the smaller and cheaper radios, calculators and computers. Just एक मैं आपको एक homework देता हूँ. Just try to Google this particular ENIAC, ENIAC. That is, it stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. So it was basically a first general purpose use computer. It was used in somewhere around 1950s. Okay, so you can just Google on that particular thing. So why I'm telling you this? जो ENIAC कंप्यूटर था, है ना, जनरल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर ट्रीट करते उसको, तो उसकी साइज़ थी, आपको पता ही होगा कि पहले के कंप्यूटर की साइज़ was nothing but it was equivalent to a big room, one hall के बराबर, right? And in that particular ENIAC, when there was no BJT, तब की बात चल रही है ना, वहाँ पे BJT यूज़ नहीं हुआ था. तो in place of BJT we have used vacuum tubes. BJT के पहले कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वैक्यूम ट्यूब्स की. So you can just imagine that one vacuum tube is nothing but a 1 CFL or 1 LED light at your home. उस साइज का 1 वैक्यूम ट्यूब था. So in ENIAC computer, general purpose computer, there were around 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब 20,000 बल्ब थे, ऐसा समझ के चलो. उसकी साइज क्या थी? इट वॉज इक्विवेलेंट टू द 1 रूम, बिग रूम, हॉल लाइक स्ट्रक्चर, और अराउंड 20,000 बल्ब उस पर लगे थे. यू कैन इमेजिन दैट, राइट? सो देयर वर मेनी हीटिंग इश्यूज और परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर था. और नाउ करंट सिचुएशन क्या है? अगर आप i7 i5 प्रोसेसर देखोगे तो वो प्रोसेसर रहता है स्मॉल स्क्वायर का प्रोसेसर रहता है ना. अगर आप प्रोसेसर की चिप भी आप ये करके देखो गूगल, सो ऐसा स्क्वायर की चिप रहती है, वेरी स्मॉल. 1 सेकेंड. इट्स डायमेंशन यूजुअली 3x3 और 4x4 सेंटीमीटर का रहते हैं चिप. यू कैन जस्ट गूगल इट. तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो इस चिप पे कितने रहते हैं ट्रांजिस्टर पता है आपको? एक छोटी सी चिप पे माइक्रो प्रोसेसर के जो i5 i7 रहते हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के, तो इस पे 1 अराउंड मोर देन 1, तो 2 भी बोलते हैं,
करंट जो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें ग्रेटर देन 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स आर देयर ऑन दिस स्मॉल चिप, है ना. तो यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेंशन, दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर इन्वेंशन. कहाँ वो एक वैक्यूम ट्यूब, मतलब एक ट्रांजिस्टर का काम एक वैक्यूम ट्यूब करता था, उसकी साइज कितनी थी, नियरली 1 लैम्प, है ना, CFL लैम्प के उतना. अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर में यू आर गेटिंग ओवर 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स. कितने जीरो आते हैं 1 बिलियन पे, किसी को पता है? हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 बिलियन? 7 7. और कोई? 7 10 raised to power 9. हाँ, that means 9 zeros are there, right? So you can imagine. So this 10 is, करोड़ हो सकते हैं सर. हाँ हाँ, 10 करोड़ की 100 करोड़, 1 मिलियन मतलब कितना, आप करो गूगल, ठीक है. तो जस्ट कहने का मतलब व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस दिस स्लाइड इज यू शुड बी अवेयर दैट ट्रांजिस्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड इट हैज़ चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड. तो अभी जो मैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, that is only due to this fact that due to this invention only we are able to do this particular things, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं होता. ओके, ऑल राइट, we will move ahead and now this we will see in the construction of transistor. So now transistor can be of two types. We know that a transistor is nothing but having 3 terminal. So this is the symbol of transistor. 3 terminals are, one is base, emitter and collector. ओके, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर है ना, फर्स्ट वन इज NPN, सेकेंड वन इज PNP. So this structure is nothing but the example of NPN transistor. So this much part is of emitter, this is base and this is collector. अगर PNP होगा तो now you can hear in NPN the P type semiconductor is sandwiched between two N type semiconductors. यही आप N को अगर P से और P को N से रिप्लेस करोगे तो एक कौन सा ट्रांजिस्टर बन जाएगा, PNP ट्रांजिस्टर. ओके, सो वी विल जस्ट डिस्कस NPN ट्रांजिस्टर थ्रू आउट, और सिमिलर कंसेप्ट आप PNP पे भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, दोनों अगर मैंने डिस्कस किए तो इट में हैपन दैट यू विल गेट कंफ्यूज. So in our each and every discussion I will be using NPN transistor. Why? Because in NPN transistor electrons are majority charge carriers and the mobility of electrons are greater than the mobility of holes. This is the point. That's why we are using NPN transistor more as compared to PNP. Okay, so now from this particular construction we want two conclusions from this diagram. Okay, so I will just ask you, तीन अलग अलग सेक्शन है ना. So first of all tell me how many PN junctions are here in this transistor, NPN transistor. Two PN. Right, so there are two PN junctions here. You can see first one is this PN junction and second one is this PN junction. All right, now next question is if I have to compare these three sections, that is emitter, base and collector, on the depending on its size, then which section is the greatest and then small. Okay, means we have to arrange them in the decreasing order, which section is greater and which section is smaller.
कोई भी बता सकता है। आउट ऑफ दिस थ्री, emitter, base and collector, which section is larger and which section is smaller? Collector is greater, base is small. Okay, very good. So that's the point I was trying to explain here. That collector, the size of collector is maximum, उसके बाद में emitter, and after that the base. Base is very thin. यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गया ये थिकनेस, जस्ट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए इसलिए इतना थिकनेस है, बट यू शुड रिमेंबर दैट बेस इज वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, नाउ अगेन एमिटर का काम क्या है? इट विल एमिट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और कलेक्टर का काम है उसके नाम से ही, इट विल कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। बेस इज यूज फॉर द मॉड्यूलेशन पर्पज। ओके, साइज का हो गया। नाउ सेकेंड, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इफ यू ऑब्जर्व दैट इन एमिटर these black dots are nothing but the electrons. So यहाँ पे electrons की जो density है, the density of electrons here in emitter is greater than the intensity or density of electrons at collector, है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटर में ज़्यादा दिख रहे हैं कलेक्टर से, और कलेक्टर से और एमिटर से कम बेस में दिख रहे हैं। What it indicates that the doping concentration. So again remember, doping of emitter is highly doped, whereas collector is moderately doped and base is lightly doped. ये words you should remember this. ठीक है, emitter is highly doped, collector is moderately doped and base is lightly doped. इसकी वजह से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमिटर विल बी वेरी लार्ज, number of electrons in collector will be in medium, less than emitter but greater than base. But again we know that base is nothing but a p type. So p type में electrons आएंगे क्या? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है p type में? होल्स. But again base कैसा है? बहुत lightly doped है. So that's why very few number of electrons will be there. Okay, so these 2 points are very important. साइज की कंपैरिजन कैसी होती है और डोपिंग. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कलेक्टर हैज मेड इन लार्ज साइज? व्हाई द साइज ऑफ कलेक्टर इज लार्ज? ओके, सो आंसर क्या है इसका कि कलेक्टर को मैक्सिमम एमिटर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, कलेक्टर हैज टू कलेक्ट देम, राइट? सो कलेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है? द हीट गेट्स जनरेटेड बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स. सो कलेक्टर को क्या करना पड़ता है? उसको कलेक्ट करने की वजह से व्हाट हैपन्स, द हीट इज जनरेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कलेक्टर सेक्शन. सो वो हीट डेसिपेट करने के लिए जल्द से जल्द उन्होंने क्या किया है? दे हैव इंक्रीज द एरिया ऑफ कलेक्टर. बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर दिस, जब आप चाय और कॉफ़ी पीते हो कप में, राइट, और जब वो बहुत गर्म होता है तो क्या करते हैं आप? यू पोर इट ऑन द प्लेट और द डिश, है ना? फिर डिश से आप पीते हो. व्हाट इज चेंजिंग? व्हाई यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग? कप में से चाय आपने डिश में क्यों ली? बाय डूइंग सो you have increased the surface area of your tea or coffee. तो surface area जब बढ़ा दोगे तब क्या होगा? heat will be dissipated rapidly, है ना? चाय और कॉफ़ी आपकी जल्द से जल्द ठंडी हो जाएगी. So the same logic is applied here. So what is the reason behind
maximum size of collector, because collector in the working of transistor, जब भी आप ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे तो कलेक्टर को मैक्सिमम हीट डिसिपेट करना पड़ता है, तो दैट्स वाई उसकी साइज इंक्रीज की. Okay, so I hope these 2 points are clear to you. Now again in this slide, this is the symbol of NPN transistor and this symbol is of PNP transistor. So the important point you should remember that there is one arrow. This arrow indicates the flow of current. We will see how the current is flowing in this particular transistor, but फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि current flows in NPN, the direction of current flows from base to emitter होता है ना. current always flows like this. और ये जो एरो हेड होता है वो हमेशा कौन से टर्मिनल पे होता है, एमिटर. कलेक्टर पे एरो हेड नहीं रहेगा. एंड दिस डायरेक्शन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. इन पीएनपी क्या हो जाएगा, देखो जो भी बात एनपीएन के लिए कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग फॉर एनपीएन, सेम इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ पीएनपी. रिवर्स्ड इन द सेंस, अभी एनपीएन में सपोज जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, तो पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होगा, उनकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट होंगी. इट विल बी फ्रॉम एमिटर टू बेस, है ना. इच एंड एवरीथिंग अपोजिट होगा पीएनपी और एनपीएन के केस में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरोहेड, बट अगेन यू शुड रिमेंबर दैट एरोहेड विल बी ऑलवेज ऑन एमिटर. So in this way we have discussed this much part until now. Just few minutes remaining for 1:30 and we will stop here. So these many points are very important. We are proceeding quite slowly here, but since this is very important, you should be able to understand it completely. Okay. So we have seen few slides here, starting from diode, then depletion width variation, then important points, then bipolar junction transistor, and we have seen its construction. Remaining slides we will see in the next lecture. So if you are having any doubt, then you can ask me, or you can directly unmute, or you can write YouTube chat box.